आज नया चैप्टर शुरू करना है ना। चैप्टर नंबर 4। ओ, चलो पढ़ो, कौन पढ़ता है? किसी का कुछ अनुभव बताना है जो लास्ट पढ़ा था, कर्मयोग और स्थित प्रज्ञ का। तू बोल रही थी, मेरे को तो लगता है बस अभी कर्म योग ही करने का, स्वधर्म ही करने का, तो स्थित प्रज्ञ होना शुरू हो जाएगा। हाँ मैम, लेकिन एक बात है कि चैप्टर नंबर 4 तो थोड़ा बहुत मैंने सुना ना, तो मुझे मतलब जब तक आगे नहीं जाते ना तब तक ऐसा ही रहता है कि बस इतना ही है ऐसा। हाँ, कंप्लीट लगता है अपने आप में वो। हाँ, मतलब मुझे ऐसा था कि जब मैं फर्स्ट टाइम वो स्थित प्रज्ञ के उस पे थी, तो मुझे लगता है कि इसमें क्या है, वो तो बैलेंस हो जाएगा और स्थित प्रज्ञ हो जाएंगे, ऐसा था। लेकिन जब आगे जाते हैं तो अरे बाप रे, इसमें तो ये सब कुछ भी है। देन स्वधर्म आया, तो स्वधर्म में ऐसा था कि जो ड्यूटी मिली है उसको करना है, ओके, दैट इज कॉल्ड स्वधर्म। बट वो थोड़ा और आगे गए, कर्मयोग में आया तो वो स्वधर्म में भी कितना सारा है, सकाम कर्म, निष्काम कर्म। देन ऐसा रहता है कि वो जो बैलेंस स्टेट रहता है वो है। देन थोड़ा और आगे गए तो अभी चैप्टर नंबर 4 में पता चलेगा कि वो सब जो फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप है उसको और अच्छे से, कितने अच्छे से हम लोग कर सकते हैं, ऐसा। मतलब अभी इंटरेस्ट आ रहा है कि मैं ये काम और अच्छे से कैसे कर सकती हूँ, उसमें ऐसे क्या भाव आ सकते हैं, ऐसा। तो क्यूरियोसिटी जो बोलते हैं ना, हाँ, हाँ, बढ़ रही है। वो रहती है, वाह। ऐसा। विकर्म, द की टू कर्म योगा। पढ़ो, कौन पढ़ रहा है? प्रियंका जवाब नहीं दे रही है, तू ही पढ़। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। कर्म, चैप्टर नंबर 4, विकर्म, द की टू कर्मयोग। नंबर 14, कर्म नीड्स विकर्म टू complement it. Brothers, in the last chapter, we discussed the yoga of desireless action. It is impossible to attain desirelessness if we give up swadharma and embrace the dharma which is not ours. It is traders swadharma to sell indigenous goods. But when he gives it up and starts selling foreign goods imported from distant lands, his motive is nothing but to earn more profit. मैम, ये पढ़ना चाहिए विकर्म वाला कि बाद में पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ लेते हैं, फुटनोट क्योंकि जो ये दिया है, बेसिस है उसका पूरे का। तो क्या करें? पढ़ लो पहले। पहले ये पढ़े, ठीक है। विकर्म इज नॉर्मली translated is wrong for forbidden action. Vinoba has given term a different meaning. He had once explained the logic behind in 1957. The prefix has 3 different meanings. Opposite as viyog, different types as in vigyan, विज्ञान। vigyan, and special is in विभाव, नहीं, विधर्म। ये क्या लिखा है मैं? विध्वंस। विध्वंस, विध्वंस, विध्वंस यानी विनाश, विध्वंस। विध्वंस। Vinoba says that one has to see the context while determining the meaning of any term. It has been said in the chapter 4 that one should understand karma, vikarma, and akarma. Only then one can grasp the meaning of the principle of karma. This means that it is an introductory remark. The 4th chapter is going to explain them. But there is no mention of opposite karma. If vikarma is to mean opposite karma, such action should have been mentioned there. Rather, different special action which aid
The performance of Swadharma have been mentioned from verses 25 to 32. And what does our experience say? Action have been said to purify the mind. But do we have find that action alone lead to such purification? They have to be complemented with the other things. Thus, taking into account the tenor of the Gita and our general experience, I have held at that Vikarma means special karma. When I understood the process of karma, Vikarma, Akarma, the meaning of the Gita became clear to me. But one need not entangle oneself is a debate over the meaning of words. If one takes vikarma to mean opposite karma, one should shun such karma, and if one takes it to mean special mental action which help in the performance of karma yoga, one should take up such action, then there will be no place for debate and the truth will be revealed to us. समझा? To us. Yes, ma'am. विकर्म किसी भी अर्थ में लो, यहाँ पर चलेगा. वी का अर्थ संस्कृत के अंदर ऑपोजिट के लिए भी यूज करते हैं और Yes. स्पेशल के लिए भी यूज करते हैं. तो वो दोनों प्रकार से बताया है कि तुम चाहे जो अर्थ ले लो वो अप्लाई करेगा, बट ही हैज टेकन एज स्पेशल एक्शंस which supports actions. तो ये ट्रेडर का स्वधर्म है इंडिजिनस गुड, यानी कि लोकल. तो जो मोदी जी बोलते हैं ना, बी वोकल फॉर लोकल. इंडिजिनस गुड यानी जो जहां पर बनता है वो उनको बेचने का. Yes. लेकिन फिर वो बाहर से मंगा मंगा के जब बेचना शुरू करता है तो फिर यानी वो प्रॉफिट के लिए कर रहा है. Profit के लिए. ही इज नॉट Yes. डूइंग इट एज स्वधर्म. स्वधर्म. स्वधर्म में हमेशा सेवा भाव पहले रहता है, ऊपर रहता है. स्टार्ट करें. अभी मैं वापस फर्स्ट से स्टार्ट कर. ठीक है. तो वो मतलब पूरा ये रहेगा ना, नहीं तो हाफ हाँ, हाफ कंटिन्यूटी रहेगी. चल. Number 14, karma needs vikarma to complement it. Brothers, in the last chapter we discussed the yoga of desireless action. It is impossible to attain desirelessness. It we give up swadharma and embrace the dharma which is. एक मिनट. हाँ, कुछ तो गड़बड़ हो रही है. वो माउस का बटन नहीं दिख तो अच्छे से रही है, सुन भी रही है. हाँ, लेकिन मेरा स्क्रीन ना वो माउस की वजह अच्छा, से कुछ तो हो रहा है. एक मिनट. Which is not ours. It is the trader's swadharma to sell indigenous goods, but when he gives it up and starts selling foreign goods, it imported from distant land, his motive is nothing but to earn more profit. How can such work be free from desire? Pursuit of swadharma is therefore indispensable of desireless. Indispensable for desireless work. Indispensable for desireless work. But swadharma could also be pursued with an eye on the gains. Take the case of non-violence. For a votary of non-violence, violence is taboo. But he could be one step in violence within while being non-violent in outward appearance. For violence is an attribute of the mind.
The mind would not be non-violent merely, but giving up outward violence. A sword in hand is a sure sign of a violent mind. But one does not become non-violent merely by throwing the sword away. The same is true about Swadharma also. To have desirelessness, one must defiantly avoid the dharma, which is Definitely. not Definitely. definitely avoid the dharma which is not one's own. Only the first step towards desirelessness. That itself does not mean attain of the goal. अटेनमेंट ऑफ द गोल, Attainment of the goal. यानी कि Sorry. दूसरे का धर्म नहीं लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुद का धर्म पालन कर लिया। वो आई लाइक द स्वॉर्ड का आइडिया वेरी मच। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा। और कुछ बोलना है इसमें? कुछ प्रैक्टिस करने लायक कुछ पॉइंट मिला? यानी कि स्वॉर्ड हाथ में खाली माइंड के अंदर जो वायलेंस है उसको एग्जिबिट करती है। स्वॉर्ड फेंक देने से खाली एग्जिबिशन बंद हुआ, वायलेंस बंद नहीं हुआ। वायलेंस तो माइंड में है, वो हाँ, माइंड में से जाएगा तब वायलेंस जाएगा। तो स्वधर्म होगा वो माइंड में से उसको निकालने का। इनफैक्ट बहुत सारे योगा प्रैक्टिशनर का यही तो होता है ना, यमों के लिए ऐसे ही बोल देते हैं कि हाँ कोई भी ऐसा तो हम कोई करते ही नहीं ना गलत, तो सब सही करते हैं। लेकिन जब तुमने वीसीटी किया उसके ऊपर तो समझ में आया होगा कितना कि हमारे को मालूम ही नहीं था कि ये हिंसा हो रही है। हाँ, तो इसको हम अहिंसा ही समझ के बैठे थे, या yes. उसके ऊपर ध्यान ही नहीं करते थे कि हिंसा हिंसा है क्या। मतलब पता ही नहीं था। हम्म। करने के बाद अवेयरनेस आई कि अच्छा ऐसा भी होता है। और अवेयरनेस आएगी तो ही छोड़ सकते हो, फिर छोड़ने के ऊपर काम भी किया जा सकता है, नहीं तो कैसे होगा। बराबर है। और जो लोग ये कहते हैं और उसको उतने में ही छोड़ देते हैं कि यमा वगैरह जो हैं दे आर एक्सटर्नल, बाहर की तरफ सोसाइटी में प्रैक्टिस करने के लिए है। सोसाइटी में तो प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि वो स्वॉर्ड हाथ में है, वो दिखाई देती है, तो सोसाइटी के अंदर जो तुम्हारे माइंड में है वो सामने बाहर आ जाएगा। तो उसके लिए उसको एक्सटर्नल बताया है। सोशल नॉर्म्स कह के खत्म कर देते हैं कई लोग उसको। यानी कि सोसाइटी में यदि तुमने सामने अहिंसा कर लिया यानी कि अहिंसा हो गई, ऐसा नहीं है। ये स्वॉर्ड वाला एग्जाम्पल वही दर्शा रहा है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर हम योगा स्टूडेंट्स के लिए खास बात है कि यम भी असल में मेंटल क्लीनिंग के लिए ही है। तो वो जो भी कुछ माइंड में होगा वो बाहर एक्शन के अंदर कभी ना कभी दिखाई देगा। तो खाली बाहर एक्शन में नहीं आवे तो वो यम प्रैक्टिस हो गया, ऐसा नहीं है। अंदर भी वो भाव नहीं होना चाहिए तब वो यम की प्रैक्टिस हुई। तो अंदर से हम कितना हिंसा निकाल सकते हैं, कितना अनट्रूथफुलनेस निकाल सकते हैं, कितना उसमें जो चोरी करने की लालच है, फ्री का मिलना चाहिए, उसको निकाल सकते हैं, ग्रीड को निकाल सकते हैं, सेंस इंडल्जेंस को निकाल सकते हैं। वो बताएगा कि कितना हमने यम फॉलो किया। और एक स्टेज तक फॉलो कर लिया होगा तो फिर जैसे हमारी प्रोग्रेस होती है फिर दूसरे स्टेज पे उसको फॉलो करने का, क्योंकि यम तो आखिर तक करने का है। समाधि में भी पहुंच जाओ तो यम प्रैक्टिस करने का है। तो स्वधर्म है यानी वो यम और नियम, धर्म धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य में से धर्म की प्रैक्टिस में आता है यम और नियम।
तो स्वधर्म तो है ही। अच्छा एग्जाम्पल लिया। चले। हम्म Desirelessness is a state of the mind. Pursuit of Swadharma is necessary but not sufficient for acquiring that state. Other means must also be used towards this end. To light a lamp, oil and wick are necessary but not sufficient. It is also necessary to have a flame. Darkness, हाँ, ये अच्छा बोला वापस। हाँ, ऑयल और मतलब लैम्प यस, ये दो मतलब जरूरी। एक एक एग्जाम्पल दिए है ना, ऐसा लगता है कि बहुत मतलब एकदम सही दिए। हाँ, ऐसा लगता है अपने को कभी सूझा ही नहीं है ऐसा, कितना हमने सिंपल कभी है। सोचा ही नहीं है कि कितना सिंपल दिया है कि वो स्वॉर्ड का और माइंड का, मतलब कोई ऐसा कोई कोई भी आदमी, ऑर्डिनरी आदमी भी मतलब वो समझ सकता है कि हाँ, हाँ, मतलब इतने ज्ञान की जरूरी नहीं है, ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, कोई भी सिंपल आदमी भी समझ सकता है कि स्वधर्म को बिल्कुल। कैसे उन्होंने एग्जाम्पल से दिया है। बहुत तो सुंदर दिया है, बहुत सुंदर एग्जाम्पल। ब्यूटीफुल वे से एक्सप्लेन किया है। करेक्ट। सिंप्लिसिटी। Darkness disappears only when we light a flame. How to light a flame? For this, one must purify one's mind. The mind should be thoroughly cleansed through intense soul searching. The Lord has given this important advice at the end of the third chapter. The fourth chapter has its genius is in this जेनेसिस। advice. Genesis. यानी कि वो उस एडवाइस से फोर्थ चैप्टर निकला है। जेनेसिस मीन्स उधर से निकला है, बर्थ हुआ है, जेनरेटेड। Start करें? हम्म Okay. Number 2. The Gita used the word karma, action, in the sense of swadharma. We eat, drink, sleep. These all are actions. But these are not the actions that the Gita refers to when it talks of karma. Karma refers to the performance of swadharma. But in order to attain desirelessness through such a karma, an important aid is necessary. One must overcome desire, attachment, and anger. One cannot have desirelessness unless and until the mind has become pure and calm like the waters of the Ganga. The action necessary for the purification of mind are called Vikarma by the Gita. Karma, Vikarma, and Akarma. These three terms are important in the fourth chapter. Karma means the outward action done in the pursuit of Swadharma. Vikarma means total involvement of the mind therein. We may bow to somebody, but that outward action it meaningless without inner humility. There should be unity between the inner and the outer. I may worship the image of the Lord, but that act is worthless if it is not accompanied with devotion. In the absence of devotion, the image is just a piece of stone, and so am I. एंड And सो the एम आई। worship, माय गॉड। and the worship then means nothing. It is just the case of a stone facing another stone. Desirelessness, selfless karma yoga is attained only when outward action are complemented with the inward action of the purification of mind. माय गॉड। यानी कि
अभी इसको पढ़ के मेरे को लगता है बीसीटी को मैं हमेशा इंटीग्रेटिंग टेक्निक बोलती हूँ ना, थॉट स्पीच हाँ एक्शन का। ये भी इनवर्ड आउटवर्ड का इंटीग्रेशन ही होता है इससे। हाँ जो मन में है वही जबान पे होना चाहिए ना, ऑलवेज से बी रूथलेसली ट्रुथफुल, तो वो काम करती है। तो ट्रूथफुलनेस कितना इंपॉर्टेंट है इनसाइड एंड आउटसाइड का। और मेरे को तो ये हिट किया बाकायदा, एंड सो एम आई। क्यों, मूर्ति को जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, यदि भाव नहीं है तो वो तो पत्थर है ही, तुम भी पत्थर हो। और फिर बाद में वो काफी नहीं था, ये भी बोल दिया, and the worship then means nothing. It is just the case of a stone facing another stone. तो बाप रे, ये अच्छा दिया है। hitting hard. Stone facing another stone. Oof. मतलब वो बोलते हैं ना, आप बोलते हो ना, वो मलमल के कपड़े में लपेटा है वैसा। वो नहीं है, सीधा सीधा सूखा जूता मारा आपकी बार तो। मखमल में लपेटने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओ माय गॉड। तो विकर्म का पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उन्होंने ये बताया है, टोटल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द माइंड देयर इन। फाइन। बाहर फिजिकल जो एक्शन हो रहा है वो, और जो माइंड में हो रहा है वो सेम होना विकर्म है ना। हम्म। तो जब तक इंटीग्रेशन नहीं है इनर एंड आउटर का, कर्मयोग भी नहीं है, विकर्म भी नहीं है। ओके। मैम अभी पता चला कि पहले कैसा था कि पता था कि ये कर्म है तो करना है, समझा। देन पता चला कि दिस इज अ स्वधर्म, मतलब सब छोड़ के जो करना है, जो मुझे मिला है वो करना। नाउ थर्ड फोर्थ स्टेप कि करना तो है बट कैसे, माइंड से, मतलब माइंड माइंड इन्वॉल्व बॉडी करके। इंटीग्रेशन, समझे। तो मतलब दिस इज अ स्टेप हाँ, बाय स्टेप। एक एक छोटी छोटी चीज एक एक करके बताइए ताकि सो दिस हमारे को इज, समझ में आवे। हाँ दिस इज द वे वी रीच स्थित प्रज्ञ। हाँ, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। प्रियंका एकदम चुप है, कुछ नहीं बोलना है, नहीं शेयरिंग करनी कुछ भी। No, ma'am, I'm listening, but it's pretty clear and straightforward. So I don't know what ओके, more to add. ठीक है। बोल, आगे पढ़ो। थर्ड करें। हाँ हाँ। In the term desireless action, the adjective desireless is more important than the word action. Just as in the phrase non-violent, non-corporation, नॉन and कोऑपरेशन। cooperation. Non-cooperation, the adjective non-violent is more important than the word non-cooperation. Non-cooperation without non-violence could be a terrible टेरिबल थिंग। terrible टेरिबल, thing. टेरिबल बोलते ना, हाँ मत समझा भयानक। मैम, terrible thing. In the same way, it could be dangerous if performance of swadharma is not complemented with vikarma of the mind. तो स्वधर्म को विकर्म के साथ करना है, बिल्कुल। जो तूने पहले ही बता दिया कि स्वधर्म तो करना है लेकिन माइंड को इंक्लूड करके। ठीक है, चलें आगे। Those engaged in social service today are certainly pursuing their swadharma. When people are poor and destitute, it is a natural duty to serve them and make them happy. But all social works cannot be called karmayogis. Social service without pure motives in the heart of the workers could have disastrous डिजास्ट्रस। disastrous consequences. Such a social service can generate in equal measure the vanity, हेट्रेड, हेट्रेड। hatred, envy, and selfless that we generate when we serve our families exclusively.
This is clearly evident in the real realm of social work today. सोशल वर्क करके ये भी तो आता था ना, मैंने ये किया, अहंकार, हाँ, वैनिटी, yes, हेट्रेड, hatred. दूसरे के प्रति घृणा भी होती है, जलन भी होती है, और खुद के स्वार्थ के लिए फोटो खिंचानी है, उसके सेवा करते हुए इंस्टाग्राम पे डालनी है, पोस्ट कर, लाइक्स मिलने चाहिए, इतने लाइक्स लाइक्स, मिलने। इतने लोगों ने देखा होगा, वो देखते हैं, अरे कितने लोगों ने देखा, इसने तो हम्म, लाइक ही नहीं किया, इसने देखा फिर भी कुछ बोला ही नहीं। तो खाली सोशल वर्क कर रहे हैं इसका मतलब कर्मयोगी नहीं है। सोशल वर्क में भी सच में सोशल वर्क की मन में मोटिव इन द हार्ट, प्योर मोटिव इन द हार्ट, तब वो सोशल वर्क होगा, तब वो कर्मयोग होगा। इंटीग्रेशन वापस, गुड, लेट्स गो अहेड। थक गई है तो मैं पढ़ूं क्या, प्रियंका की पढ़ेगी? पढ़ना है? Yeah, no problem. हाँ प्रियंका तू पढ़ा के। Okay. Those engaged in social service today are certainly pursuing. Okay, sorry, we are done with this. हाँ, we are done with the 14th thing. 15th point. Karma plus Vikarma is equal to Akarma. Karma plus Vikarma is equal to Akarma. The mind should be fully in tune with and involved in work. Vikarma is the word that the Gita uses for this involvement and application of the mind in work. Vikarma means the special karma which varies with the need of each individual mind. Many kinds of Vikarma have been mentioned in the 4th chapter. They have been further elaborated from the 6th chapter onwards. Only when we perform this special karma, only when the mind is in tune with the outward action, will the flame of desirelessness be lighted. Desirelessness is gradually developed when karma and vikarma come together. The body and the mind are distinct entities, so the means to be employed for their growth are bound to be different. The goal is reached when they are in tune with each other. To achieve harmony between them, the author of the scriptures have prescribed a twofold path. In Bhakti Yoga, the yoga of devotion, they have prescribed penance and austerities without and japa within. If such japa does not accompany outer forms of penance like fasting, the latter would be in a vain. One should never forget why one is doing penance. The motive, the spirit, should always be alive in the mind like a burning flame. The word uppas, fasting, etymologically means to dwell close to God. In order that our mind and heart may dwell close to God, sensual pleasures are to be abjured. But if we give up such pleasures and do not think of God, of what value is the physical act of fasting? If instead of thinking of God, we think of things to eat and drink while fasting, that fast would be worse than a feast. In fact, there is nothing more dangerous than thinking about sensual pleasures. Tantra techniques must be accompanied by mantra spirit. Tantra in itself is not important, and mantra without action too has no value. True service can be rendered only when hands are engaged in service and there is a spirit of service in the heart. देख ये भी वही बोल रहे हैं। एक तो पहले तो यही रिपीट किया अदर एग्जाम्पल से कि विकर्मा is the action of the mind and it should accompany all the karma. Only then can desirelessness gradually develop.
यानी फिर वो कर्मयोग बन सकेगा। डिजायरलेसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। फिर और भी एग्जाम्पल ऐसे ही दिए हैं कि जैसे भक्ति योग के अंदर पेनेंस, ऑस्टेरिटीज, व्रत, तप वगैरह जो करो, लेकिन साथ में मन में जप नहीं हो रहा है, तो भी वो भक्ति नहीं है। उपवास का मतलब होता है पास में बैठना। तो भगवान के पास में बैठ के तुम भगवान के नहीं हो रहे हो, यानी कि बैठ तो गए, फास्टिंग तो कर लिया चलो, लेकिन सोच यही रहे हो कि क्या खाने को नहीं मिला और क्या हम खा सकते हैं, तो फिर उपवास कहाँ हुआ। और फिर लास्ट में जो समरी की है, तंत्र मस्ट बी अकम्पनीड बाय मंत्र। तंत्र इन itself is not important, and mantra without action too has no value। क्योंकि तंत्र में जो करना होता है विधि वगैरह, उसके साथ में वो स्पिरिट होनी चाहिए, उस स्पिरिट के साथ में वो विधि होनी चाहिए। तो tantra is doing various actions and mantra is also speaking, and therefore speaking it from the mind also. So mantra without action too has no value. True service can be rendered only when the hands are engaged in service and there is spirit of service in the heart. So head and heart has to be together. Wow. तो इस वीक ये काम करना है, हाँ, विकर्म विकर्म विकर्म, विकर्म को जोड़ना है कर्म से। ठीक है, आगे पढ़े। Yes. Performance of Swadharma will be a dreary affair. Dreary. Dreary affair without the warmth of feeling in the heart. It would not then blossom forth and bear the fruits of desirelessness. Suppose we undertake the work of nursing the sick. If there is no compassion in the heart, it would be a burdensome Drudgery. drudgery for us. To the patient, too, it will be a burdensome obligation. If the mind is not absorbed in service, it will boost the ego. Expectation will then arise in the mind. I am helping him today. Tomorrow he should help me. He should praise me. People should admire me. Or else we may get fed up and complain that the patient is peevish and irritable, even though we are taking so much care of him. Sick men are usually in a depressed and irritable mood. Without the spirit of service, we would get tired of nursing them. Good example, no? Yeah. कुछ कहना? चलो, let's go ahead. Yeah. If the mind is in tune with the work is transformed into something unique. When Vikarma joins karma, desirelessness comes into being. When a spark touches the gunpowder, it explodes. Karma is like the gunpowder. It works wonders when the flame of Vikarma ignites it. Karma in itself is inert and lifeless. It is the spark of Vikarma that makes it indescribably powerful. We may keep a packet of gunpowder in our pocket or handle it with impunity, but if ignited, it would blow up the body into pieces. The infinite power in Swadharma is likewise dormant. Combine it with Vikarma and then see that the what transformation it can bring about. The resultant explosion would reduce to the ashes ego, desires, passions, and anger, and then supreme wisdom will be attained.
क्या समझा? It's the same thing they are saying, no? That just doing any job mechanically, like machines, would not bring any self-development in us unless we bring the karma aspect, where we are, having that kind of a mental attitude towards doing that work in form of service. So then only it will actually help us to grow and give us some knowledge, wisdom. मैं सोच रही हूँ कि एक ही बात को कितने तरीके से कितनी बार हमारे को यानी कूट कूट के बता रहे हैं ना। हाँ, कि खाली एक्शन नहीं करो, बाहरी मन उसमें लगा के करो। हैमर मैम, हैमर कर रहे, हैमरिंग। हाँ, हैमरिंग हो रहा है। और कितने अलग अलग एग्जाम्पल दे दे के हर एक के अंदर थोड़ा एक शेड अलग आ रहा है। यू नो, इफ यू गो टू सी, there are so many different shades of this involving the mind with the body. यदि हम ये समझ सकेंगे ना, तो हमारे को पूरी तरह से माइंड बॉडी को कनेक्ट करने को आएगा। Really speaking, it is not repeat, it is not just repetition. In each of the examples, there is a shade which is different. So shall we go ahead? Yes, ma'am. Oh. Action is that which can kindle the fire of knowledge. When you ignite a log of wood, it turns into embers. How different are they from the log? Have But- I got a wrong page in? Page 62. What page no, ma'am? number are you reading? 63, na? 62, seventh topic. Listen. 62 मैम। हाँ हाँ, सॉरी 62, या वो सडनली एक बीच में थोड़ा सा रिंग बज के बंद हो गया, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई उसमें। सॉरी, कैरी ऑन। Seventh point. Action is that which can kindle the fire of knowledge. When you ignite a log of wood, it turns into embers. How different are they from the log? But it is, after all, the log which has undergone this transformation. When Vikarma is united with karma, karma attains a divine radiance. A mother's action of caressing her child is apparently insignificant. But who can describe the upsurge of emotions it gives rise to in the hearts of both the mother and the child? It would be utterly nonsensical if one were to say that such emotions would result if a hand of such weight and such softness is down such a back. Yes, the action is insignificant, but the mother has put her whole heart into it. And it is this Vikarma that gives unparalleled comfort and joy. There is an incident described in the Ramayana, written by Saint Tulsidas, the Varanas. What? the No, Vanaras. The The monkeys. Vanaras had, the Vanaras had come wounded and bleeding after a battle with the demons. They were in great pain. Lord Ram just looked at them with love, and all their pain vanished. It would be ridiculous if someone else were to try to bring about such a result by looking at them in an So beautifully said. So beautifully given. होता है ना, आदमी थक के एकदम आया होता है, उसको प्यार से तुम एक पानी का गिलास ही पिला दो, उसको देख लो, और सच में मन शांत होता है, जैसे थकान सारी उतर गई है। सो ब्यूटीफुल। वाह, wow, this is nice to read. Yeah, I love this fourth chapter. पढ़ें? Yes. चल।
is combined with karma, there is a powerful explosion of energy resulting in akarma. A big log of wood, when burned, turns into just a handful of harmless ash. In the same way, karma, ignited by vikarma, results in akarma. Is there any relation between the properties of wood and that of the ash? Absolutely nothing. You can collect the ash in your hands and merely smear it all over your body without harm. But there is no doubt that the ash has come out of the burning of the log of wood. ये समझा अकर्म के बारे में? When vikarma is combined with karma, there is a powerful explosion of energy resulting in akarma. अकर्म यानी कि वो वाले कर्म जिसका कोई फल नहीं पैदा होगा. अकर्म तब हो जाएगा जब डिजायरलेसनेस हो जाएगी. और जब तक कर्म और विकर्म इकट्ठा नहीं होते हैं, शारीरिक कर्म और मानसिक कर्म एक नहीं होते हैं, तब तक डिजायरलेसनेस नहीं पैदा हो सकती. जब वो एक हो जाते हैं, when karma is ignited by vikarma, तो अकर्म बनता है. जैसे when fire burns the wood, ash is formed. तो ash has got no properties like that of the wood. एकदम अलग है. यानी अकर्म विकर्म और कर्म से अलग हो जाता है. एकदम ही उसकी अलग है क्वालिटी. यानी वो न किया हुआ जैसा कर्म है. माय गॉड. एक्चुअली देखा जाए तो अब मैं ऐसा सोच रही हूँ, किसी को यदि ये समझाने जाओगे तो बोलेगा कि यदि माइंड उसमें इन्वॉल्व्ड है, बॉडी भी उसमें टोटली इन्वॉल्व्ड है, तो फिर वो अकर्म कैसे हुआ, डिजायरलेसनेस कैसे हुआ? बेसिकली कहने पे नहीं समझ में आएगा. लेकिन ये जो पहले वाले सारे एग्जाम्पल्स, जब तुम एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इनको गो थ्रू करोगे और हर एक एग्जाम्पल में जो उन्होंने कंक्लूजन निकाला है उसको देखोगे, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि कर्म प्लस विकर्म अकर्म कैसे बनता है. नहीं तो दिस स्टेटमेंट कैन बी अ क्वेश्चनेबल स्टेटमेंट. इंटेलिजेंटली स्पीकिंग इट मे नॉट मेक सेंस. ये तो बॉडी माइंड इकट्ठा होंगे तभी समझ में आएगा. यानी इंटीग्रेट इंटीग्रेट इंटीग्रेट. तो 7 स्टेप्स में इंटीग्रेट करके 8वें स्टेप में बोल रहे हैं विकर्म इज एडेड टू कर्म टू मेक इट अकर्म. चलो ठीक है. लॉग ऑफ वुड बर्निंग एंड एश 9th पॉइंट पे चलें. When vikarma is united with karma, akarma results. What does it mean? It means that one does not then have the feeling of having done anything. Action does not weigh on the mind of the actor. We act, but still we are not the doer. As the Gita says, you are not the slayer even if you slay somebody. A mother may give a thrashing to her child, but the child will still turn to her for solace. He would not do so if you were to thrash him. He would not do so if you were to thrash him. It is so because the mother's heart is pure. Her action totally devoid of self-interest. Vikarma, or the purity of mind, erases the actionness of the action. Infused with the inner Vikarma, Lord Rama's action of looking at the Vanaras became a sheer outpouring of healing love, and it did not tire Rama a bit. Action performed with pure heart is free from any attachment. There is therefore no question of any sin nor merit remaining as a residue after the action is over. Wow, so beautiful. So beautiful. Go on, sorry. Otherwise, an action puts greater burden and pressure on the mind and the heart. Suppose the news breaks out
now that all the political prisoners are going to be released tomorrow. Emotion. We are always agitated and strained with anxiety by the actions, good or bad. Action engulfs us from all sides. It catches us by the scruff and of our neck. Just as the sea waves dash against the shore and makes channels into it, the forceful waves of karma enters the mind and agitates it. The dualities of pleasure and pain are created. Peace of mind is lost. Even after the action is over, its momentum remains. It takes hold of the mind and makes it restless. But if karma is coupled with vikarma, any amount of action does not tire, calm, peaceful, and radiant. When vikarma is poured into karma, it results in akarma. It is as if karma gets erased after it is over. Wow. अकर्म समझ में आया? Yes, ma'am. And why it is important and how it can be done? पहले तो बॉडी माइंड को इकट्ठा रखो हर एक काम में, और वो इतना इकट्ठा रहे कि एक्शन डिजायरलेस हो जाए. तो डिजायरलेस होने का मतलब ही है वो अकर्म हो जाना. खाली 1 मिनट के लिए एक्शन और फिजिकल और मेंटल एक्शन इकट्ठा हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड रिमेन टुगेदर, और वो भाव उसके अंदर आना चाहिए. सब भाव का खेल है. So that bhav is just to, rather we are just surrendering to God. Whatever we are doing is we are like doing it for Him. Like with that attitude, we are doing the work. So that is vikarma. Yeah. Wow. So attitude matters so much. Attitude training is so important. चलो करें भाई, करें. विदाउट डूइंग यम नियम आसन प्राणायाम में फंसने का नहीं. आसन प्राणायाम बॉडीली एक्टिविटी हुआ ना, उससे पहले माइंड को तैयार करने का यम नियम से, ताकि वो आसन प्राणायाम करने के अंदर घुस जाए. अब जैसे राम जी ने उनकी तरफ देखा, देखना एक्शन हुआ, लेकिन उसके बाद में उन्होंने प्यार उसमें जोड़ा, ऐसा तो नहीं ना. मन में प्यार पहले से था, उस प्यार की भावना से उनकी तरफ देखा. तो यम नियम पहले होना चाहिए, हम बाद में भी नहीं करते. चलो, आर्ट ऑफ अकर्म शुड बी, हाँ इसलिए आर्ट ऑफ अकर्म शुड बी लर्न, राइट एडिंग. Art of karma should be learned from the saints. How does karma become a karma? From whom can we learn this art? From the saints, of course. The Lord say at the end of this chapter, go to the saints and learn from them. Language fails in describing how karma is transformed into a karma. To gain an understanding of this, one has to sit at the feet of the saints. The Lord is described as Akaram, Bhujaga, Shayanam. He is fully at peace even though he is lying on Shesha, the thousand-headed cobra. The saints too do hundreds of actions, but do not allow even a little ripple of commotion to rise in the still water of their mind. This remarkable thing can never be understood unless the lives of saints are observed at close quarters.
ब्यूटीफुल। कि सांप के ऊपर सोए हैं लेकिन उनको कोई घबराहट नहीं है, ही इज एट पीस। उस प्रकार से अकर्म करना है। चलो ठीक है। Nowadays, books have become quite cheap. There is no dearth or of teacher. Education is widespread and cheap. Universities are liberally doling out knowledge. But nobody seems to have assimilated it. In fact, the more one looks at the heaps of books, the more one realizes how necessary it is to sit at the feet of the saint. The knowledge and Encased. encased within the thick covers of books does not step out of those covers. I am always reminded of an Abhanga devotional poem in this context. Kam krodh aad padile parvat rahila anta palikade. Palikade. The high mountains of desire, passions, and anger bar the way to the Lord. Similarly, the way to knowledge is barred by the heaps of books. Although libraries are everywhere, man still seems to be an ape, ignorant and uncouth. There is a big library at Baroda. Once a gentleman was carrying a thick volume, thinking it to be an English book. When I browsed through it, I found it to be a French book. The gentleman must have thought that as the book was in the Roman scripture, the nice pictures and good binding, so it must be full of knowledge. True. चल लास्ट पैरा है, खत्म ही करते हैं। Yes, ma'am. Every year, 10,000s of books are published in English. This is so in other languages too. With such spread of knowledge, how is it that men behave so stupidly? Some say that the power of memory has weakened. Some say that concentration is becoming difficult. Some say that whatever a man reads appears true to him. Some say that there is no time left for thinking. The Lord says to Arjuna, yoga will be far away so long as your intellect, confused by listening to different things, remain unsteady. So stop reading books and listening to others and surrender yourself to the saints. There you would read the book of life. Your doubts will be dissolved by the silent, wordless sermons there. You would know how to remain perfectly serene even while constantly performing acts of service. How the heart could be tuned to produce music without break, even as the storm of action rages outside. At one go, we completed the whole chapter. But what a chapter, yeah. Yeah. Oof, just to say one point, to drive it home. Let mind be involved in what you are doing. Let emotions be there. And then see the magic. How karma vikarma becomes akarma. Excellent, yeah. Thank you. मैम इसको बोलते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका. Good way of describing chapter 4. Good, yeah, good meeting. I'm happy both of you came and we could have the class. अभी जरा कांटेक्ट करो ना जो अपने जानने वालों को, तो कम से कम बोलो अभी तो हो गई छुट्टियां पूरी, आ जाओ. चलो करते हैं. है ना. चलो ठीक है. थैंक ओके यू. प्रियंका, थैंक यू. थैंक यू. बाय योगिता. बाय बाय मैम. थैंक यू प्रियंका. थैंक